Hello everyone, welcome back to Hong Kong with Sam, and we are reaching Top Mun Island. Top Mun is also called Grass Island. As I may remind you all, means the plan was different. We were headed to Abundant Island but ended up in Top Mun because the ferry services to Abundant Island, Tung Tung Chau, were cancelled, and there we dock. And one more evening and night of camping begins. Finding a new home. You can see the queue. It's a really long one, and many people out there. You can see people heading out in full force. Oh, sorry. No. Thank you. So once you head out of the ferry pier, that's a very small ferry pier. You go straight into the village. It's a very small island and a very small village. Basically, you can cover it like in a hike in around 40 minutes. So you can start from this place, the main street of the village, and go either way. That is the Young Shuo village way. So if you go this way, then means like you don't have to like change your route or anything. You just keep walking and you will end up in the same place from this side. But as I got to set up my tent, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कैंपिंग साइट के लिए. बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट बेसिकली, where you pitch your tent like right looking right into South China Sea. बहुत ही सुंदर. बहुत सारे गाय भी कभी कभी they come and create mayhem in the tents. So you need to like look out for that. So welcome on this small adventure. Nothing adventurous actually, but then a night under the skies, under the stars is like beautiful. After a short hike, a very short hike, not even 15 minutes, actually not even a full 10 minutes, we reached the campsite area. This seems to be a real big family. They have a huge tent and have taken up much of this area. Seems like one family or at least friends. See how beautifully they have set up with tables and everything. Lovely. बहुत ही सुंदर. पूरा एक परिवार था वो, और आपने देखा कि कैसे अच्छे से सेटअप किया हुआ था. और बहुत सारे लोग इन गायों को देखने आते हैं यहाँ. बहुत ही सारे लोग. They are all tagged. Someone is flying a kite over there. So this is Top Mun, Grass Island for you. Now you can see ये टेंट का शहर मुझे बहुत बार ये कुंभ मेले की याद दिलाता है. इस बार बहुत ही स्ट्रेंज, मतलब मैंने बहुत सारे साउथ एशियंस यहाँ पे देखे जो कि कम ही होता है, पर शायद कहीं और जा पाना संभव नहीं, ट्रैवल बंद है, तो शायद इसलिए. बट isn't it like really beautiful? एकदम कुंभ मेले वाला भाव. A city of tent with people, its residents changing every day, every other day, if not every day. And that is the view we get. Everyone, this is Top Mun after the tourists have gone back, barring those who have stayed on and are camping. Top Mun के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं. मैंने ये हमेशा जब भी यहाँ कैंप किया है तब इस बात पे ध्यान गया है. They sleep rather early. तो आप ये देखें, सन्नाटा, पूरी तरह से शांत. ये लोग लौटेंगे, सामान तो ले जा रहे हैं, लेकिन ये जाएंगे कैसे? बिकॉज दिस इज द टिन हाउ टेम्पल. टिन हाउ समुद्र की देवी, और समुद्र की मतलब मछुआरों की देवी. एंड दैट्स वाई लाइक यू विल फाइंड सो दीज किड्स खेल रहे हैं ये. दिस इज ए स्टोर. सो नाउ वी नो दैट देयर इज ए स्टोर. यहाँ पे तो पानी भी होगा. एनीवेज, so you can see, and this is a temple, functioning temple. I don't know which god, but अभी बंद. सुंदर
सजावट कुंगई फाट चॉय के लिए। लोग बैठे थे थोड़ी देर पहले तक, अभी चले गए। ड्रैगन बोट्स and people making merry. This is Chinese New Year if I remind you. So फिर से अब अगली रपट कैंप साइट, और ये कैंप साइट में उतर आई रात। पीपल एंजॉइंग, सम पीपल आर गोइंग डाउन, पर अब उनको वहाँ पे कोई सप्लाईज तो मिलेंगे नहीं, सो नो आइडिया बाय। देन hello everyone, so this is how the night descends on Tapman in absolutely electrifying way. बहुत ही शानदार, आप देखें पूरा मस्ती हर तरफ। this one place, यहाँ पे इतनी सारी नेशनलिटीज़ के लोग होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। एक बहुत छोटी सी जगह में फिलिपिनास, इंडियंस, ऑफ कोर्स साउथ एशियंस, Nepalis. This is one big group of Filipinas. They are dancing away to glory. Lovely, absolutely lovely. And now I am heading for my tent. उससे भी दिखाएंगे आपको। So this is our tent. As you can see, we have reached back after buying water and small things. ये हमारा टेंट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, वो जो टेंट, हेलो कुंगई फाट चॉय, एंड दैट इज द टेंट सिटी फॉर अवे, जिसको छोड़ा है हम लोग काफ़ी पीछे अब। और ये हमारा टेंट, लाइट्स आती हुई टेंट पे अब, और अंदर बाहर तमाम लाइट्स। दूसरा वाला लाइट भी जला दो दिव्या। क्या? ओके श्योर, ओके उससे जला लो, ड्राकू से। ओके, ये आ गया हमारा टेंट। अगर आप देख सकें, डिस्को लाइट्स एंड स्टार लाइट्स, अंदर फेरी लाइट्स भी हैं, वो देखना पड़ेगा। हमारे पीछे वाला टेंट बहुत खूबसूरती से सजाया है, और हम लोग उस टेंट सिटी से उतनी दूर आ चुके हैं। अगर आपको जो दूर लाइट्स दिख रही हैं, वो अदर कैंपर्स लाइक हु एंजॉय कैंपिंग लाइक मे बी टुगेदर, जो एक साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सेक्लूडेड, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से। एक टेंट पीछे, वन लाइक बिग वन, रादर बिग वन देयर। सो या, इट्स फन। द नाइट हैज जस्ट बिगन। सी यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, वेलकम बैक to another tent city in Grass Island. That's Tapman. Or there are so many people out here taking up every single place. These small, beautifully decorated tents. Seems like a family out here cooking things. We just finished our cooking. And so many of them. This is like lovely. इतनी रात में माहौल मैंने जैसा बताया था, बहुत इलेक्ट्रिक, बहुत शानदार। लोग एंजॉय करते हुए। And what is coming is like, it's a huge tent area. You can see here also people enjoying a lot. Today is second day of Chinese New Year, so people are free also. लोग खाली, पर आप देखें कितने सारे लोग। Huge. And social responsibility, you can see how he has put a garbage bag. They will collect all their litter और लेके जाएंगे उसे वापस। माहौल, बुजुर्ग भी, बच्चे एंजॉय करते हुए, दौड़ते हुए। प्रे कि किसी दिन वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन also become civilized enough that people feel safe, और वो ऐसे ही कैंपिंग वगैरह कर सकें।
एंजॉय कर सकें। वाह, ये भाई साहब भी आए हैं कैंपिंग करने। कपल। Oh, his headlight is very strong. His headlight was very strong, far more stronger than mine. और अब देखें हम लोग उतरते हुए, बस स्टीप डिसेंट हियर, दिलचस्प बेहद सब कुछ। और इसी के साथ अगली रिपोर्ट फाइल करता हूँ। Straight out of the sea, that red dot is the sun, around which everything evolves. And as you can see, sun is there like in its full glory, going up and up. It's not even 5 minutes and it looked like कि बस सीधे समंदर से ही निकले हूँ सूरज जी एकदम अचानक। डॉट 5:57 पे, सॉरी 6:57 पे। It is winters. Lovely, one of the best sunrises I have ever seen. So clear, so beautiful. Hello everyone, so this is basically now getting to the last leg of the TapMoon camping experience for today. So you can see people waking up and what a sunrise it was. But basically slowly and steadily they will pack up despite winters. बहुत गर्म हो जाता है यहाँ, ऊंचाई थोड़ी और सन सीधा, उसकी वजह से। So we are now reaching the new fisherman's village. Basically a very easy hike. You just keep walking and walking and walking, and from here there are two ways, but they both take you to the same place, TapMoon Island Main Street. This way you will cross a school, that way you will cross basically village edge and a few houses, but essentially the same. It's a very small hike and a lovely hike, I will say. Yes, for the amount of work, the effort you put in, the views are like 100 times, not 100, thousands of times like more rewarding. Wow, I love this lion. And with disembarking from the ferry back at Malaysia, this camping expedition gets over. These people must be going, TapMoon only. So here you can see the number of people despite COVID and everything, but also notice that everyone is wearing a mask and no one is violating any social distancing norms, like people are in their own groups. So see you all for another adventure sometime soon. Bye bye.